Riding was always on my head, and you all know that. The point of riding with a cause, taking a message somewhere out there, which for to me personally was a really good thing. Rather than that, I was more concerned about the amount of water we would be saving. So with that thing on my mind, I thought that we should actually take this message ahead and try to be a part of helping out to make the world a better place. अपन अपने को पहुंचना है कहीं तो कोई टेंशन नहीं, पर उसके पहले भी पहुंचे चलेगा, बट पहुंचना है, बात को समझो, रिटर्न नहीं जाने का आपको। Hi, this is Hemang here. This was my first ride with the Pit Lane group, Hyper Riding, and it was an awesome day. Absolutely lovely weather, great roads, but stupid Indian vehicles who cross the highway at any point in time, and I had a near-death experience out of that. The point of mentioning this incident is that I loved how the riders banded together after that, and I don't know any of them, hardly any of them to be honest, maybe just Dumpy and probably a couple of other people, but I love how the riders come together, they support each other, and it just gives a sense of comfort, feeling, and I'm so looking forward to the rest of the adventure now. लिंक है ना ये वाले, हाँ, इस पे मारो, और मतलब रोलर्स ये वाले पे, हाँ, ये बाहर नहीं, तो इस ये पे ये दोनों के गैप में सेंटर अच्छा पे और ऐसे ये, हाँ, तो थोड़ा डिस्टेंस मार के ताकि पूरा कवर हो, हाँ, राइट? इस तरफ और इस तरफ, और बाद में रोलर पे थोड़ा मारो। हाँ,
अरे तसं नाही होत, फ्लश केल्याशिवाय कूलंट नाही टाकत. हे बघ रे लेवल आली का, हा मला सांग. कुणाल, आवाज देख ना कैसा है ये. वर्षामधून येतो असं वाटतं आवाज. कनेक्टिंगचा आवाज आहे रे भाई. ओके, थांबावं लागेल आपल्याला. खोलावं लागेल. इंजन खोलना पडेगा. काय करायचं? थांबावं लागेल आता. आयदर लाईक सॉर्ट करावं लागेल, नाहीतर मग परत उगाच तिथे मध्ये कुठे प्रवासात अडकून. ठीक आहे, बघू मग आता. चालेल. चल. Good morning, guys, and welcome to D2. It's a rainy start today, and we're starting the day with a issue. Laukik's bike has developed an engine snag, and we think that the connecting bearing has developed an issue. The bike can't ride anymore. We'll have to ship it back and sort it out now. Let's see what we do it. Yesterday was a pretty tiring day. We had a long ride. The team reached Ratlam at around 8:30 p.m. in the night. Everybody was tired, and Laukik complained of a sound. We checked it out today, and that's a major issue now. Okay, good morning, guys. Good morning. So day 2, and we are one rider short. Laukik has to fly out of Indore because for a bike issue. Yesterday was their first day. आराम से चला है. It's already 11 a.m. We have around 650 kilometers to do to Churu. That's our target for today. We won't be having a lunch halt. Today we'll be covering longer distances. Yesterday it was about you not sleeping well day before. Today it will be about you stretching your levels. So you'll be extending your interval levels. There'll be shorter breaks. Nobody stops in between. कल मैंने कुछ चीज़ें तुम लोगों को सिखाई राइडिंग केयर में अबाउट बेसिक सिग्नल्स एंड थिंग्स. हॉर्न सिग्नल्स, 1 single horn long is positive, 2 single horns are caution. Today you learn one more thing. Always have the guy behind you in your mirror. If he is not, slow down so that आपके आगे वाला अपने आप स्लो डाउन हो जाए. एंड अकॉर्डिंगली मेरे को भी समझे कि आपके पीछे गैप बन गया है, स्लो डाउन होना चाहिए मुझे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली ऑन टर्न्स. स्पेसिफिकली जहाँ पर अपन टर्न्स मार रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप अंटिल आपके पीछे वाला बंदा आता नहीं है. कल हम रतलाम एंटर किए, नोबडी स्टॉप देयर बिकॉज यू डिडंट नो दिस कम्युनिकेशन. बट नाउ यू नो ऑन एवरी टर्न यू हैव टू वेट टिल द गाय बिहाइंड यू कम्स. लास्ट इज कुसू, बट बेसिकली तुमको वही रिप्लेस करते जाना एक दूसरे को. तुम्हारे पीछे वाला आ गया, वो रुकेगा, तुम आगे जाओगे जब तक उसके पीछे वाला आता नहीं है. ओके, I hope everybody has checked their bikes, done their chain maintenance, oils and everything. Everybody's fueled up? Yes. Okay, chalo, let's ride, boys. Let's go.
व्हील को स्पीड सेंसर दी है, उसको बोलते हैं व्हील स्पीड सेंसर। व्हील स्पीड सेंसर का सिग्नल जो है ना, एबीएस का कंट्रोल मॉड्यूल आता है, जिसको एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं। वो एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल में एक व्हील स्पीड सेंसर का सिग्नल दिया है, और एवरी व्हील का स्पीड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है अपने कंट्रोल मॉड्यूल में। तो जब गाड़ी चलती है और अपन सडनली ब्रेक अप्लाई करेंगे, उस समय सिर्फ आरपीएम ही, मतलब व्हील का स्पीड ही नहीं, बट उसका जो डिसेलरेशन का एंगल है वो भी काउंट करता है ECU। फिर ये पता चलता है ECU को कि भाई कौन सा व्हील ज़्यादा घूम रहा है, कौन सा व्हील कम। इसका मतलब ये निकलता है कि जो व्हील कम घूम रहा है उसको ब्रेकिंग ज़्यादा मिल रही है, जो ज़्यादा घूम रहा है व्हील उसको मिल रही है कम, मतलब पावर कम मिल रही है। तो उस केस में क्या होगा, एबीएस जो है ना, आगे वाले का जो कंट्रोल वॉल्व रहता है उसको रिलीज़ कर देगा। मतलब क्या होगा, उसमें ऑयल प्रेशर बढ़ जाएगा, और पीछे वाले को ऑलरेडी अपन ब्रेक दबा के ही रखे, समझिए आप। तो दोनों का स्पीड जो है ना वो मेंटेन होगा, तो व्हील वैसा लॉक नहीं करने देगा और अपेरेंटली वो रुक जाएगा। ये एक बेसिक चीज़ होगी। अभी दूसरी बात ऐसी रहती है ना कि जो एबीएस मॉडल रहता है उसमें फंक्शन रहते हैं, जैसे कि सप्लाई, होल्ड, रिलीज़, सप्लाई, होल्ड, रिलीज़। अभी ये क्या होता है, जब आप ब्रेक दबाओगे ना तो ऑयल सप्लाई होना चाहिए ताकि ब्रेक लगे। बट अगर ऑयल सप्लाई जा रहा है और व्हील का स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गया और व्हील लॉक होने को आया, तो उस केस में वो क्या करेगा पता है, एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल या तो उसको होल्ड करेगा या तो प्रेशर को जो है ना वो रिलीज़ कर देगा। समझ गए आप। होल्ड किया तो क्या होगा पता है, होल्ड किया ना प्रेशर को तो उसको ऑयल प्रेशर जाना बंद हो जाएगा, मतलब व्हील जो है ना वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रुकेगा, रहेगा मतलब, और फिर वो रिलीज़ कर देगा ऑयल को, फिर पकड़ेगा ऑयल को, फिर रिलीज़ करेगा, फिर पकड़ेगा, फिर रिलीज़ करेगा। इस तरह से वो चलता है, तो वो व्हील को लॉक नहीं होने देगा। और ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। मिली सेकेंड में होता है, अपन सोच भी नहीं सकते। अभी ये एक बात हो गई, जैसे मैंने पहले बताया, दोनों व्हील का स्पीड वो कैलकुलेट करता है, बरोबर। अभी आप अगर देखोगे ऑफ रोडिंग में व्हील जो है ना, वो कोई व्हील गड्ढे से ऊपर आएगा या थोड़ा जंप करेगा, तो दोनों के ऊपर जो लोड रहता है ना व्हील पे, वो अलग अलग रहता है। दोनों का जो लोड है, रिलेटिव लोड बोलते हैं ना दोनों व्हील्स का, वो डिफरेंट रहेगा। जब दोनों व्हील पे लोड अगर डिफरेंट है तो ब्रेकिंग का इफिशिएंसी में भी डिफरेंस आता है, क्योंकि जो व्हील पे लोड कम है उसको ब्रेकिंग जल्दी होगा, जो व्हील पे लोड ज़्यादा है उसको ट्रैक्शन मिलेगा, तो उसको ब्रेकिंग उतना जल्दी होगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा पता है क्या, आपका गाड़ी रुकेगा नहीं, और एबीएस जो है वो होल्ड रिलीज़ करेगा, और आपका ब्रेक पेडल जो है ना वो अंदर घुस जाता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि ब्रेक पेडल जो है ना अपना पूरा अंदर चला जाता है, तो गाड़ी रुकता नहीं है। तो ऑफ रोडिंग में स्विचेबल एबीएस ये फ़ायदा देता है कि अगर आपने ऑफ रोडिंग में एबीएस को बंद कर दिया तो गाड़ी जो है ना, आप कंसिस्टेंट ब्रेक, एक कॉन्स्टेंट ब्रेकिंग पे आप गाड़ी चला सकते हैं, ये फ़ायदा होता है। और अपन जो हाईवे पे चलते हैं, जब एबीएस ऑन रहेगा तब पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे भी गाड़ी जो है वो स्किड नहीं होगा, वो बेनिफिशियल हाईवे पे रहेगा। ये दोनों फ़ायदे हैं। मतलब एबीएस के जितने प्रोज है ना उतने कॉन्स भी है, तो कॉन्स अपन सेशन में देखेंगे बहुत सारा। मतलब एबीएस बहुत सारे प्रिंसिपल पे चलता है, एक प्रिंसिपल नहीं होता। अपन सोचते हैं हाँ ब्रेक दबाया लॉक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं रहता है। उसको कंडीशन होती है, टेम्परेचर काम करता है, व्हील स्पीड मैटर करता है, आपका लोड मैटर करता है, ट्रैक्शन मैटर करता है, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है एबीएस पे। Hi. Today was the second day of our ride, but in the morning only we faced issue with Lokik's bike and we had to ship it back. So we were late to leave from Ratlam. So we started around at 11:30 am. We were not expecting to reach, like cover this much of distance, but we cut on the lunch break and we did 2 times tank to tank, and still we covered 5-10 kilometers, I guess. So that is like achievement for all of us, like group of 15 people. So that was the highlight for me, I guess, today. So yeah, day 2 has ended now. We have finally reached 100 kilometers before Churu. Churu was the ideal target, 650 kilometers. We started somewhere at 11:30 after shipping Lokik's bike back to Pune. Lokik will be joining the group from Jammu. So that's one good news. Other than that, aaj ka ride was more about distance covering. We did 2 full tanks to full tanks.
From 11:30 till 6:30 evening, we rode continuously and covered around 520 kilometers. That's good for today. Now, target for tomorrow is basically Amritsar. The riders did really well today. They covered good distances. The formation was good. They're learning. Let's hope tomorrow's a good day. इसको हथौड़े लगेगा पकड़ So this is how it helps when you ride in a group. Might be any issue, chain tubing, chain cleaning, or like the one we faced, cone set getting loose. All these issues get sorted because there are people around you who will try to help you and fix it for you. So yeah, there are upsides and downsides to everything. This is the upside of riding in a group, that you have people taking care of you and your bike and helping you learn about your bike. How good is that now? So, day 3 morning. Good morning. And one bad news. Day 3 पे एक और राइडर कम हो रहा है अपने साथ. So Prashant has to ride back to Pune. There's some issue that he cannot be diverted and he has to go back to Pune now. So yeah, luckily nothing major has happened. He is all safe, everything is good. We just wish him best of the luck for whatever he's doing and going back for. And for the rest of us, it's 600 kilometers for us, Amritsar. Same like yesterday, we are starting at a better time today, 8 a.m. So we have 3 to 4 hours better, expecting the same timeline somewhere around 5-6 p.m. to Amritsar. With no issues, of course. Ride safe and please try to conserve your bikes for Ladakh. Ride इधर खत्म नहीं होने वाला है, so be careful in potholes and bad roads. A rim bend can damage your ride, and it can derail the whole timeline that we are following. So be careful with your bikes, with what you're doing. Maintain safe distances. Yesterday you did a pretty well job at maintaining the formation. Just carry that forward and use hand signals. The hand signals that were showed, please, I'll just reiterate them. There is anything on the road, just try to show it. पीछे वाले को दिखाना है, तुम उसको दिखने नहीं वाला क्या है. So you have to show it to them what is happening, what is not. Something on the road. खड्डा आ रहा है, पहले खुद सेफ हो जाओ and then दिखा दो पैर से या हाथ से. At least speed breaker is something like this. ये हाथ छोड़ोगे नहीं तो ये हाथ से. कि भाई speed breaker आ रहा है. That is why I am slowing down. Good enough. Try to keep that communication intact. And best of luck, boys. Thank you. And best of luck, Prashant. Chalo. Thank you. Chalo. Take care, guys.
अभी देखो ओके थोडंसं बाहेर पण पाहिजे ना. असं पाहिजे का तुम्हाला असं हां बस ओके हां ओके परफेक्ट So this is what happens when there's a bit of coordination issue in the group. Two guys missed the turn and they went straight. There's a KTM going behind them, carries them up. Let's hope we do that fast now. आगे. I see them already. चलो आगे लोग. उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दे देने का टिंग 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 सब समझ आएंगे अरे ये तो सब गाली है रे अगला कौन सा उड़ता पंजाब क्या होता है? टूलकिट किधर है तेरा एलन के वगैरह पीयूष रंजन. उसका ऊपर टॉप बॉक्स में है ना हाँ फिर ठीक माझे आहेत इथं तुझी बॅग आहे डंपीची आहे वरती आहे. माझे पण आहेत वर टैंक का जरूरत देखते हैं अगर पड़ा तो खोलने का नहीं तो नहीं खोलने का टैंक की जरूरत नहीं पड़ेगा. कपड़ा निकालना ये रख दे यहाँ से नहीं इसको साइड में दोनों को हाँ दो है. सेकेंडरी तुम लगाया ही नहीं ना. हाँ मैंने जानबूझ के खोला है ना खोल कर चालू टूलकिट है क्या उधर टूलकिट इधर है और तू कॉइल का मेन बोल्ट लगाया नहीं था. लो वाइब्रेटर में भी करंट छोड़ेगा. तू पहले बोल्ट लगा फिर चेक करूँ मैं. करते हैं ग्राउंड तो बोल रहा सही है तू ग्राउंड नहीं दे रहा तो हिलता रहेगा ना वाइब्रेशन से. बट दूसरा बोल्ट किधर है So yeah, day 3. We are in Amritsar. We reached Amritsar somewhere around 8:30 p.m. in the night. All thanks to a bike issue. This time again a Dominar, and it was mine. So we were facing some electrical troubles, and the bike was not ready to run. So we towed all the way some 125 kilometers to Amritsar, me and Kusu. It was a great fun ride. You can have a few views. Other than that, the main thing is the bike isn't fixed yet. So we'll try to fix it up today at Bajaj Auto. There's a dealership nearby. I hope they're able to fix it.
and I hope we're able to reach Jammu today. Let's see what happens. अभी दोनों पार्ट प्लग नए हैं साइड के और सेकेंडरी कॉइल नए हैं. पानी लगवा दे तो स्ट्रॉन्ग करते हैं. I look really happy. I am really happy. Bajaj ने finally problem identify कर लिया है. It was a plug issue, and we've done. 10:30 on the clock. Let's hope we start for Jammu in half an hour. Really happy. Thank you, Bajaj. So, finally, 13 hours started. We became 14, back to 12, we're back to 14. Welcome, Pankaj and Samir. Hi, my name is Pankaj Bhalerao. I started this ride from Pune on 7th August. I took the solo ride from Pune till Amritsar, covering Gujarat, Rajasthan and Punjab, and eventually reached Amritsar day before back. And Dumpy and his pit lane group has joined yesterday, and we'll be joining them to the Ladakh ride from here. I've been riding with pit lane since I think 3 years now, and they are a great group. It's like family, and I think I'm very comfortable with all of them. Yep, that's it. And I think they are also very professional in general for riding as a concept. So you feel safe and you feel energized as well. So thanks a lot. Adios. हाय गाइस, माय नेम इज़ समीर और मैं नंगल से अमृतसर के लिए राइड किया था डे बिफोर यस्टरडे, और सुबह मॉर्निंग स्टार्ट की थी और दोपहर के 2-2:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच गया था अमृतसर में एंड जॉइंट पंकज. और आज हम अमृतसर से जम्मू के लिए राइड करेंगे. तो पिट लेन के साथ ये मेरी सबसे पहली राइड है, और आई केम टू नो अबाउट पिट लेन थ्रू सोशल मीडिया and some followers motorcycle enthusiasts that I follow on Instagram. तो देखते हैं क्या रखा है आगे और कैसा रहता है सफ़र ले के लिए. बाकी meet you on the road. Last night was a difficult night for me specifically with bike giving the issue, but luckily we are sorted with it now. So we are good to start the ride to Jammu. It's only 210 kilometers. Let's ride directly to Jammu. We'll have to stop at the border for antigen test. So उधर थोड़ा आराम से चलाओ. Don't create unnecessary trouble for us कि फालतू में और पंगा हो जाए. So be careful while riding. Specifically यहाँ पर overtake करते हैं left से. Be very careful if you're overtaking from the left. Very very careful from the left now. Yes. This time you have to be careful. People here are very weird, and specifically in standing traffic if you're overtaking. Be careful. Baaki nothing else. Let's ride to Jammu. We have something waiting for most of you guys there. Let's see what's that. Chalo. Fuel, I guess you have more than 4 bars, everybody, right? 150 किलोमीटर तो So okay, 150 kilometers. We'll take a stop. We'll take a stop somewhere before we reach the hotel, so that we are ready for tomorrow with full tanks. Yeah. Got it? Done. Chalo, let's ride, boys. Okay.
मिलेगा और उसके आगे भी पैसिवली एक्सपीरियंस करने वाले का ऑनलाइन एक्सपीरियंस। बहुत ही लंबा दिन था। बारिश ने मौसम अच्छा किया बट साला कीचड़ हो गया सब गाड़ियों पे। बाइक का हालत देख पूरा कीचड़ सब गाड़ी पे। अब श्रीकांत गाड़ी थी। अरे बाप रे, ये तो कितना चमक रहा है। चमक रही थी। श्रीकांत भाऊ बेटा क्या खिलाए क्या गाड़ी को? श्रीकांत भाऊ चमका रहे गाड़ी को। क्या करवाते हो गाड़ी के? क्यों भाई क्या हुआ? देख क्या शोषण करने कब गए थे? नहीं कुछ तो अलग किया है। क्या किया है भाई, हमको भी करवाओ, हमारी गाड़ी को भी करवाओ। हमारी गाड़ी को करके चाहिए। हाँ यार पॉसिबल, व्हाई नॉट? वो भी इतना जल्दी कैसे हो गया? अब गए भी नहीं हो गई। ये तो खास बात है, हो जाएगा आपकी गाड़ियों का। ओके चलो। और ये क्या चीज़ है आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्या बात है, बताओ यार। हमें भी ऐसी गाड़ी रखने में मजा आता है यार। हमारी गाड़ी चमके ऐसी। हो जाएगा। ओके। Hi, good evening. Good evening. It is not formal, but yes, we guys are live on Facebook even now. Oh, nice. So it's a really happy moment, and I know during this period there was so much of curiosity and buzz built around. Quite a few of you might be speculating that क्या चल रहा है, something is cooking. Some people might got annoyed also कि that यार like what is this stuff, आपने बता भी नहीं रहे हैं सही से, मतलब mystery is like getting forwarded to one day to another. Okay, so this is the unveiling moment. Okay, so as Dumpy talked about why we are doing this together, he spoke about his purpose. My purpose. And at the same time, let me quickly talk about what this Go Waterless is as a brand. Before that, one thing we understand, but still the situation is alarming, which I want to highlight once again, which is the situation with respect to the water and the crisis. Okay, let me talk about Niti Aayog. Niti Aayog is a government body. As per the research and survey done by Niti Aayog, only 4% of world's freshwater reserve is available for our country, with a population of what we have. And with this, it is estimated by the year 2040, 90% of our population will not be having access to fresh water. Whatever water you will be having, it would be contaminated in some way or the other, and things like that. And even now, we are facing a situation where at least at any given point of time, 60 crore people in a year do not have access to hygienic water, leading to at least 2 lakh people dying every year because of this situation. Now, why we are so much concerned? One thing we understand, we realize that okay, water crisis है, ये एक बड़ा problem है, करना चाहिए, water conserve करना चाहिए, save करना चाहिए. Let's look also about that where does the water gets wasted, right?
if you talk about one of the biggest and top contributors is consumption in something which is as petty as non-living things like washing vehicles, and unfortunately not having any stringent guidelines to conserve, recycle, reuse, or penalizing wastage of water. So more than 90% of the sector is completely unorganized. So somebody has to take the lead. So that's how this initiative took birth, and it is not very old. As a company, as a brand, it is hardly 1.5 years old. The first franchise outlet for Go Waterless as a company got started in the month of November 2019, and whatever progress had happened is during the lockdown period, during the pandemic. But yes, we are pushing this agenda and the mission for Go Waterless. Now let's also quickly, I want to talk about some statistics. जब हम गाड़ी अपना कार भी लेके जाते हैं कोई वॉशिंग सेंटर या सर्विस सेंटर में, एनी आइडिया कितना वाटर लगता है, कितना पानी लगता होगा, कितना लीटर एक गाड़ी धोने के लिए, 4 व्हीलर ऑन एन एवरेज? around 80 liters. 10-15 लीटर वॉशिंग सेंटर Washing center. 10-15-20 80, that's the best figure you got. Again, statistically calculated is on average between 150 to 200 liters. 150 to 200 liters. Imagine one car, 4-wheeler getting washed with 150 to 200 liters of water. And any idea how many cars our country has? 3 crores. 30. 3 या 30, sorry. 3 crores तो अरे 30 crore cars. Forgot the zero. Even if you are considering it on the lower side and assuming that over a period of 1 year, at least around 45 to 50 times such wash happens for per vehicle, and if you add it up, if you extrapolate, it goes up to 2 trillion liters of water wasted on car wash every year. that is potable water. And I guess that would probably be only the car wash. Every day Only car parking में wash. धोता है वो अलग है. Yes, I am talking about only car wash. No other vehicles considered here. If you add up, see, that's why the gravity of this problem needs to be highlighted. People need to be sensitized. We take it for granted sitting at home that ठीक है हो रहा है तो चलने दो. So that's how this initiative got started. We still have a long way to go. So that's why we also have a mission for us to save 1 trillion liters of water. And as an offshoot of that, the other side of coin is that while we are talking about conserving water, the other side of that is that why shouldn't we provide potable water, which is not just like a normal water. So technically also this water is processed differently. What is this brand called as Go Water? Okay, so on one side while we are saying that we are conserving water, the other side is we are providing a good quality potable water. So this is silver accelerated and highly oxygenated water. So you will find the difference in the taste also when you consume it. Totally. Besides this, lot many other things we are adding up. Now while we are doing all this, we thought that it would be really brilliant idea where we can collaborate, and we as a team, like, we are carrying this mission saying that this ride we want to pass on this message, and it gels very well with the main ride where we are going, where the water crisis is there big time. Ladakh has a major water problem. Absolutely. So Must have heard of Sonam Wangchuk. Yep. He is a major activist working for water conservation in Ladakh. Yes. Ice stupas. And okay, let me break the ice. We are trying our level best to rope in Sonam Wangchuk also. Nice. If, keeping fingers crossed, if things go our way, we all get to meet him.